Hello and welcome. We are currently in the Worli Assembly constituency of Mumbai in Maharashtra, and with me is Aaditya Thackeray, who's fighting arguably the toughest battle of his life. You got a high-profile Rajya Sabha MP against you. You got an MNS candidate. Are you feeling a little nervous? No. There's a lot of excitement. It's not just the three candidates. There are almost 10 of us, and I think every candidate is equally important. The excitement of the change that is coming to Maharashtra, that is the feeling today, more than nervousness. It's excitement. And I'm just approaching very humbly, showing my work and receiving the blessings of people. So the government is saying, forget the change that is coming to Maharashtra, change is coming to Worli. They say that Lok Sabha you barely won with 6,500 votes, and they think they can best you. Exactly for this, a man has jumped into the fray with the cushioning of a Rajya Sabha seat. He is not even confident of coming into the fight without the cushioning of a Rajya Sabha seat. But having said that, I mean, now we're walking on the streets of Worli. 2.5 years ago, you and I, exactly the same way, were walking in Davos. And you saw the work the MBA was doing in Davos, the kind of meetings we were having, the kind of investments we pulled in. I think that is what we are doing exactly, taking to the people the work we've done. Jai Maharashtra! No, before I zoom out to what's happening in the rest of the state, I want to spend a moment on Worli itself and the fact that in the Lok Sabha results, if the trends were extrapolated into assembly results, you were ahead by only 6,500 votes. First, why was that the case? And secondly, does that make you anxious? We've done this on the conclave also. Yes. We've compared Worli's result to Varanasi's result. We've compared, all of these results. I think those results are there for us to see, observe and study. But what is very important is no two elections are the same. You will see a lot more people stepping out to vote during the Vidhan Sabha. That is one. Two, the kind of work that we've put in, the effort that we've put in and the work that has happened in Worli is very, very crucial. I think that is what will speak for itself. So, Aditya, as you campaign in this assembly election, how do you think this current election is different from the Lok Sabha elections? The government thinks that time the constitution, Dalit reservation, etc. became an issue, which are not an issue in the state elections. I think what is very important is when we spoke about the constitution. When we spoke about the constitution, the saving of the constitution started off, the movement started off from Maharashtra itself. If there's one state in this country where the constitution has been put aside, it is Maharashtra. We have an illegal government for the last 2.5 years. Elections haven't been held as per the constitution's requirement in the urban local bodies. All of it still matter. But what is also important to us today is the kind of industries and the job opportunities that Mr. Modi has taken away from us, from Maharashtra to Gujarat. And that is very hurtful for us. The kind of suicides that are happening in the agrarian belt, the kind of urban decay that we are seeing, the kind of corruption we are seeing in Maharashtra, especially in cities, is terrible. That is the change that we seek, because we want to change all of that. That will change. This wasn't the kind of politics MVA carried out. So the Mahayuti's big charge is that the Thackerays are a speed breaker on Maharashtra's development. That they will come and slow down all the projects, block the infrastructure which is being built. I think everybody knows Mahayuti is no longer Mahayuti, it's Maha Jhuthi. And nobody trusts them. Which is why they need campaigners from other states, chief ministers from other states to come and back their lies up. But it's not possible. Maharashtra will not trust the BJP or Eknath Shinde that has looted Maharashtra for the past 2 years. Now, one of the reasons you were able to do well in the Lok Sabha elections was because many assemblies made one Lok Sabha. So you could have won very big in one, say, Muslim-dominated or Dalit-dominated assembly, and that would have helped you in the segments where you lost. That's not the case in an assembly election. Does that go to your disadvantage? For us, we don't look at anyone with a tag of religion or caste or creed. We're looking at everyone as a citizen of Maharashtra and a citizen of this country. Be it the Lok Sabha polls, be it the state polls, the state has seen the worst kind of politics by the BJP in the past 2 years. Breaking parties, breaking families, breaking people who are together, breaking societies that are strongly knit. I think this kind of dirty politics has never been the case of Maharashtra before. And this is what we want to change, and you will see the change coming. I've been touring Maharashtra to almost every district I've gone to in the past 2.5 years. No district is happy. Not a single person in the state feels that he or she or their needs have been addressed. I was looking at the recent political stock exchange tracking data by Sea Voter. It seems
Eknath Shinde has been able to overtake the popularity of the likes of Devendra Fadnavis by almost 100%. In fact, he's now ahead of your father Uddhav ji as well in terms of pan-state popularity. See, I mean, one tracker showing it is not really relevant. All other trackers are showing, all the people are showing. Hi, hi, Jai Maharashtra. Hi, तुमचं नाव? मंथन, तुझं? दिनेश. And तू? Vignesh. Best of luck. They should be saying best of luck to you. Exam तो आपका है. नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ, हमारी तो चलती रहती है एग्जाम, इनका तो भविष्य है आगे. So I was talking about Eknath Shinde's popularity. He seems to have risen in his position. See, anyone can be popular, but the reason why he's popular is pannas khoke ekdam okay. He's popular for his corruption. He's popular for breaking parties. He's popular for lying. That's what his popularity is about. But he says, आप देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ, रात भर काम करता हूँ, सुबह जग जाता हूँ. That the Thackerays are incapable of so much hard work. ऐसे तो कोई और भी कहता था मैं 4 बजे जाके योगा करता हूँ, लेकिन जब योगा दिन आया आपने देखा कैसे पैर फिसल रहा था. यही बात है कि इतना घूम के, इतना सब इधर उधर जाके, अच्छा वो रात में क्यों जागते हैं वो उनको पता है. बहुत सारे लोगों को पता है कि अमावस्या की रात को क्यों जागते हैं, वो सब उनको पता है. लेकिन मैं आपको यही बताता हूँ कि इस राज्य में पिछले 2 सालों में अगर भाजपा ने या एकनाथ शिंदे ने अगर एक भी बड़ी इंडस्ट्री लाई हो तो मुझे दिखाओ. अगर एक भी नया जॉब क्रिएट किया. बट इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफी इंप्रूव हुआ है पहले से और अभी कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स बन भी रहे हैं. राहुल जी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसे नहीं होता कि 2 साल में किसी ने बना दिया. इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एमटीएचएल है, एमटीएचएल काफी सालों से बन रहा है. नमस्कार. काफी सालों से बन रहा है. जब उद्धव जी सीएम थे उन्होंने पहला गर्डर लॉन्चिंग किया था. जब हमारी सरकार गिराई गई तब तक 82% पूरा था. इनको 2 साल लगे, आगे के 18% या जो भी 20% है कंप्लीट करने में 2.5 साल लगे. आई हैड टू ट्वीट अबाउट इट 5-6 times to the Prime Minister so that he gives his time for inauguration. Coastal Road should have been completed by December 2023. अगर हमारी सरकार होती तो दिसंबर तक पूरा हो जाता, लेकिन डिले हो गया. इन्होंने एस्केलेशन किया. मुंबई पुणे मिसिंग लिंक हो, वर्ली कनेक्टर हमारी सरकार गिराई. 1 साल में हमने 48% किया था. अभी इनका जो अपडेट है 2 साल में 57% हुआ, यानी सिर्फ 9% बढ़ा है. ये जो डिले और एस्केलेशन का इनका पॉलिटिक्स चलता है, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डिले है, कॉन्ट्रैक्टर बदले हैं और कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है. ना उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे. आरएसएस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी इसमें आ गए. इसको एक तरीके से महाराष्ट्र में उतारा जा रहा है. पीएम ने भी इसकी बात की कि हिंदू समाज बटेगा तो महाविकास आघाड़ी उनको काटेंगे. जब जब भाजपा को लगता है कि भाजपा हारने वाली है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है. जब जब भाजपा को लगता है कि भाजपा हारने वाली, जाति में कुछ वाद निर्माण करते हैं और कुछ नहीं चला तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बोलते हैं, जिस पाकिस्तान में नवाज शरीफ जी को जाके मोदी साहब ने ही हक किया था. तो ये उनकी जो डिवाइसिव बातें हैं ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगी. पिछले 2 सालों में भाजपा ने बहुत बार कोशिश की है कि दंगे निर्माण करे, लेकिन दंगे हुए नहीं महाराष्ट्र में. इसी का कारण एक ही है, क्योंकि हम महाराष्ट्र धर्म में बिलीव करते हैं. हमारा विश्वास महाराष्ट्र में है, इस माटी में है, इस भूमि में है. आज अगर आप देखें तो जो ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल ये बटने वाले लोग हैं, बटाने वाले लोग हैं. ये फिर काटते हैं हमारे लोगों को और फिर काटता हमारा खिस्सा है और फिर काटते हैं हमारी ट्रेजरी को. बटेंगे, कटेंगे और लूटेंगे, यही भाजपा की नीति रही है. The likes of Narayan Rane and other BJP leaders are saying that अगर बाला साहिब ठाकरे अगर जिंदा होते तो वो गोली मार देते उद्धव ठाकरे को कि ये हिंदुत्व के साथ धोखा कर रहे हैं. These aren't real Thackeray's, that they are betraying the Hindutva and Maratha cause. If you see what is happening, right, the kind of leaders that the BJP is imported, the dirtiest kind of leaders with their mentality, I think that is the problem. Someone saying कि इसको गोली मारनी चाहिए, उसको गोली मारनी चाहिए, ये गली के गुंडे भाजपा ने नेता बनाए. क्या कैसे लोग हैं ये उनकी भूमिका है. भाजपा इसमें स्पष्टीकरण दे. मुझे लग रहा है आप एक्सरसाइज थोड़ी मिस कर रहे हो. चांस तो मिल नहीं रहा होगा. बिल्कुल नहीं, शायद ऑलमोस्ट 1.5 महीने से एक्सरसाइज थोड़ी बंद है. 1.5 महीने से बंद है. कुछ ना कुछ चलते ही रहता है. सो पिछली बार पुशअप कर रहे थे, इस बार आप क्रिकेट खेलने बैटिंग करते हैं. मेरी थोड़ी बीच में बैक की इंजरी हुई थी, बट अदरवाइज दोनों कर लेता हूँ. बैटिंग बॉलिंग दोनों, ऑलराउंडर. जैसे मजा है वैसे कर लेते हैं बैटिंग. देखो, दिस इज मुंबई फेमस गली क्रिकेट. मुंबई गली क्रिकेट. देखते हैं कि आदित्य ठाकरे के पॉलिटिकल स्ट्रोक्स तो देखे हैं. लेट्स सी सम क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स नाउ. एंड दिस इज गली क्रिकेट मुंबई स्टाइल. अरे इतना धीरे बॉलिंग क्यों कर रहा है? मालूम है नेता है, जोर से फेंकना. ऐसे क्या फेंक रहा है? जोर से फेंको. ये तो बड़ा स्लो बॉलिंग कर रहे हैं आपको. ये हमारी बी टीम है. अच्छा, ये आई स्पिन. अभी जब आप बैटिंग कर रहे हो आप क्या सोच रहे हो? बॉलिंग कौन कर रहा है? कौन सा पॉलिटिशियन? नहीं, बॉलर कर रहा है.
इतना किसी की शक्ल नहीं दिख रही, किसको छक्का मारना है एकदम वर्ली के बाद। नहीं, उनको उतना सीरियसली मत लो, इनको मिलिंद देओरा बॉलिंग करते हुए आ रहा है सामने से। नहीं, चलो फिर लेफ्ट हैंड। राइट राइट लेफ्ट दोनों। नहीं, I'll bolt you. हाँ, रुको मैं भी बॉलिंग करता, मेरे को बॉल। आप फास्ट बॉलिंग अच्छी खेलते हो कि स्पिन बॉलिंग? चलो ठीक है, देखते हैं। ओके, हियर वी गो। I said that was a conclave special. ये तो आपने फर्स्ट बॉल पे उठा के 6 मार दिया। बिल्कुल, और यहाँ ज्यादा हम आवाज करें तो हमारी यहाँ हाउसिंग सोसाइटी से हमारे ग्रुप्स भी है। मेरे को एक और चांस दिया था, ये तो गड़बड़ हो गया। टीवी पे लगेगा कि मैंने एक बॉल फेंकी और आदित्य ने उसको उठा के 6 मार दिया और सेकंड बॉल का चांस भी नहीं दिया। ऑप्टिक्स। ये तो एक बड़ी अजीब सिचुएशन है। आपकी पॉपुलैरिटी सबसे छोटे बच्चों में मुझे सबसे ज्यादा लग रही है, उनमें आपको देख के एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, मुझे भी मजा आता है क्योंकि ये जो इनोसेंस है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट। एंड जब सरकार में भी थे तो मेरी एक पैशन थी कि स्कूलों में काम करें हम। बीएमसी के स्कूल में अगर आप देखें तो आईबी बोर्ड लाए, सीबीएसई बोर्ड लाए, क्योंकि ये जो सारे बच्चे हैं दे आर द बेस्ट पार्ट ड्यूरिंग एनी कैंपेन। जिस इनोसेंस से वो आपको हाय कहते हैं, बाय कहते हैं, जो साथ में घूमते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फन पार्ट ऑफ द कैंपेन। How have you seen your politics evolve over the past decade? How are you different now from, say, when I interviewed you 10 odd years ago? I think what I've seen in the past 10 years, 14 years is basically every day is an evolution. Issues keep changing. When my grandfather was active in his career, every decade there was a different topic that came up. Every decade was a different sense of relevance. You had to raise different issues because those are the needs of the people. Today, with the kind of connectivity we have, the global connectivity we have, the exposure we have to the world, and the world has to us, I think issues change on a daily basis. You must be seeing it in news cycles also. Something that is important in the morning has already gone back to the number 2 priority over something else in terms of the news cycle. So, as politicians, as people who are serving the society, who are trying to voice the society always, we have to keep ourselves relevant and keep voicing them. At the same time, also show what is right, what is wrong to the society. If Dalit reservation and the constitution were the big issues for your alliance in the Lok Sabha elections, what do you think has been able to capture the imagination this time? I'll tell you, this time if you see across Maharashtra, a lot of feedback is we already know we're voting for the MBA. You don't even need to come and campaign is a feedback from a lot of constituencies. Of course, we're going out and reaching out to them. We need to keep taking their blessings, seeking their blessings, because it is very, very important, along with the votes. But then the issues of the constitution are relevant. Issues of reservation are relevant. Along with that, something which was also resonating during the Lok Sabha times and is important today also is the kind of loot the BJP and Eknath Shinde have started off in Maharashtra. Be it for the BMC, be it for Pune Municipal Corporation, be it for any other city or district. I think the issues today on ground are there, and you can see a seething anger, yet a very silent anger in the people's mind. Do you concede that Haryana was a big disappointment for the India alliance, that this idea that BJP was slipping has now been upended by the Congress's debacle in Haryana? But then there's Jammu and Kashmir, where the India has won. So if you see both the sides, right, there is one state which was lost by the India, one state which is won by the India alliance. I think this keeps happening. But the most beautiful part is at least you had elections and you had so many people turning up for it. That is what we're looking for. आपको लगा कि कांग्रेस का थोड़ा सा arrogance कम हुआ हरियाणा में हार के बाद, in the negotiation थोड़ा दिमाग ठिकाने आए? नहीं, आप उस राह पे मत चलिए, हम तो यही बता दो कैमरे के पीछे क्या? Tell you very honestly, without any holding back, we always hope and feel that our alliance partners should succeed wherever. So that is a genuine belief. नहीं, पर पहले थोड़े से aggressive तो हो ही रहे थे ना. They were kind of trying to flex their rooms कि हमें CM चाहिए. हर कोई पार्टी होती भी है, क्योंकि हर कोई पार्टी सोचती भी है कि उनको बढ़ना है, आगे बढ़ना है. नमस्कार. Do you feel the India alliance would have been better had they projected Uddhav ji as chief minister for the Mahavikas? Definitely a face will help. I think what is important today is the fact that even Uddhav ji said that he's not fighting for the CM's post and we're fighting for Maharashtra is very crucial. This is not a personal battle. This is not a battle for any personal ambition. This is about Maharashtra itself. Yes, all our trackers, all our surveys are showing that, if Uddhav ji is projected as a face, he is the most trusted person in the state today. Having said that, it is neither his personal ambition nor his desire to be taking any post. It is about winning people's heart
and campaigning, serving the ये बड़ी चर्चा चल रही है कि उद्धव जी की अमित शाह साहब से, बीजेपी के लीडर से बातचीत होती रहती है, एंड इफ द असेंबली रिजल्ट्स आर फ्रैक्चर्ड दैट यू ऑल मे गो बैक टू द एनडीए. Look, the BJP today is a very different BJP from the BJP that was Vajpayee Saab's BJP, Advani Saab's BJP, Mahajan ji's BJP, Munde ji's BJP. The BJP today is very business to business. There is no relationship. If there was a relationship, a feeling of family today in the BJP, then you would have not seen Pankaj Tai, Poonam Tai, और गोपाल शेट्टी जी और विनोद तावड़े जी और प्रकाश मेहता जी और राजपुरोहित जी being ignored by the BJP as they are being ignored today. That is sad. Even their own old कार्यकर्तास, एकनाथ खड़से जी, their own very own कार्यकर्तास are actually being sidelined by the BJP. And राहुल कह रहे हैं कि ये लोग डिनिस्ट हैं, we are throwing up organic talent. आप देखिए ना, ये जो पिछले 2 सालों में सरकार बनी है, उसमें संघ के कार्यकर्ता को या बीजेपी को क्या मिला है? क्या मिला है? सीएम जो है हमसे फोड़ा हुआ है, 2 डीसीएम में से 1 डीसीएम जिसके खिलाफ बीजेपी ने पिछले 10 साल कैंपेन किया, आंदोलन किए, लाठी काठी खाए, जेल में गए, उसी को सर पे बिठा दिया है, पुणे का गार्डन मिनिस्टर बना दिया है. फिर मंत्रियों में अगर आप देखिए तो 9 मंत्री फूटी हुई राष्ट्रवादी से, 10 मंत्री हमसे है, और फिर 10 मंत्री जो भाजपा के हैं उसमें सिर्फ 6 मंत्री बीजेपी के हैं. ना एक मंडल, ना महामंडल, ना बीजेपी को मिला, ना संघ के कार्यकर्ता को मिला. तो फिर मिला क्या? नहीं, पर आपने बड़े स्मार्टली मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं. मैंने बोला बीजेपी के टॉप लीडर से बातचीत चल रही है आपकी बिहाइंड द सीन. बिल्कुल नहीं, हम बिहाइंड द सीन्स कभी नहीं करते, जो है खुलेआम करते हैं. हाँ, बीजेपी से बहुत बार ये रूमर चलाते हैं कि कोई अपना आवेश बदल के आया था घर पे, कोई स्कूटर पे आया था घर पे मिलने के लिए. बहुत बार मैसेजेस भी आते हैं, लेकिन जो घर जलाने वाली बीजेपी है, जो महाराष्ट्र लूटने वाली बीजेपी है, उनके साथ हम नहीं रह सकते. क्या मैसेज आ रहे हैं बीजेपी से बहुत सारे आ रहे हैं, वापिस आने के लिए? बहुत सारे आते रहते हैं, कई बार डायरेक्ट आते हैं, कई बार इनडायरेक्ट आते हैं, लेकिन सीनियर लेवल से आते हैं कि जूनियर लेवल से? अभी उनमें लेवल क्या है पता नहीं. खुद कभी को सीनियर बोलते हैं, कभी जूनियर बोलते हैं. लेकिन एक बात है कि हम जो भाजपा महाराष्ट्र लूट रही है उसके साथ नहीं जा सकते. So there's no question of a rapprochement, no question of going back. We are moving forward. तो अगर आपको आदित्य ठाकरे मौका मिलता है वर्ली को सर्व करने का, यहाँ के लिए, इस इलाके के लिए आपका क्या प्लान है? What is your plan for वर्ली? पहला प्लान तो यही है कि जो पुनर्विकास के प्रश्न है, जो रीडेवलपमेंट के, बहुत सारी बिल्डिंग्स 100 साल पुरानी है, बहुत सारी बिल्डिंग्स अभी डिलैपिडेटेड है, तो इनको हेल्प करनी जरूरी है. हम करते आए और करते रहेंगे. मुंबईचे डबेवाले You know, one of the concerns, Aditya, is that what is left of the Shiv Sena is not very strong, say outside the Mumbai, Thane, Konkan belt, because you're now half a party. It's not as strong in the rest of Maharashtra, in places like Marathwada, in places like Vidarbha. कि बचा नहीं है दम आपकी पार्टी. हमारे कार्यकर्ता जहाँ है वही है, हमारे साथ ही रहे. जो गए, जो गद्दार बने, वो जो गब्बर बने थे वो गद्दार बने, लेकिन जो हमारे साथ रहे, निष्ठावंत रहे, वो कार्यकर्ता आज भी साथ है. इसलिए आप देख रहे हो जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जिस प्रकार का हमें एक रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा है. Well, you have a bloody, brutal, tough election in front of you. We wish you all the best for taking out time on the campaign trail. Thank you. And elections don't need to be bloody and brutal. You know, it is an election. All of us as politicians need to realize we need to treat elections as elections and celebrate our democracy. आप कह रहे थे कि डावोस में मिलेंगे, कॉन्फिडेंस है कि जनवरी में होगे सरकार में? बिल्कुल, लेकिन उसके पहले महाराष्ट्र में हर जगह अच्छे काम करते करते मिलेंगे. Thank you so much. Wish you all the best.